Second chapter, parallel lines. What is parallel lines? Non-intersecting coplanar lines are called parallel lines. Okay. These lines are parallel lines. Line L, line M, line L and line M. This is the parallel lines because these lines are non-intersecting and coplanar lines. These lines is called as parallel lines, and parallel lines are denoted by line L parallel to line M. Okay. Then a transversal. What is transversal? A line intersecting two or more coplanar lines in distinct points is called transversal. This is the transversal. This line is N. So this is transversal because this line N is a transversal intersect line L and line M. So line N, L and line M at point A and B. Means line N intersect the line L and M at point A and B. So this point line N is called as transversal. This is the transversal. Line L parallel to line M and line N is the transversal because this line N intersect at point A and at point B. So this is the transversal. Then next topic is angles formed by two lines and their transversals. Angles formed by two lines and their transversal, page number 13. This is the line L and line M. Line L and line M, and this line N is the transversal and this line is the transversal. Here intersecting at A, B, C, D, and here E, F, G, H. Then what is the pairs of corresponding angles? Alternate interior angles, alternate exterior angles, and pairs of interior angles on the same side of the transversal. The first is pairs of corresponding angles. First point is corresponding angles. Corresponding angles. First, here there are four pairs of corresponding angles. First pair is angle D congruent to angle H, or angle D and angle H. This is the pair of corresponding angle. What is corresponding angle? लाइन के ऊपर वाले, लाइन L के ऊपर और लाइन M के ऊपर वाले और सेम साइड के, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के. So this is like angle D and this angle H. This is the corresponding angle. Okay, लाइन के ऊपर वाले और सेम साइड, दिस इज द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल. एंड लाइन के नीचे वाले एंगल डी इक्वल टू एंगल एच, एंगल सी एंड एंगल जी, बोथ आर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो सेकेंड पेयर इज एंगल ए के साथ कौन सा एंगल? ई. सो एंगल ए, एंगल ई. थर्ड, लाइन के ऊपर वाले एंगल डी के साथ एच, ए के साथ ई. देन लाइन के नीचे वाले तो सी के साथ जी एंड बी के साथ एफ. सो एंगल सी and angle G, and fourth pair is angle B and angle F. These are the corresponding angles, and these corresponding angles are congruent to each other. So angle D congruent to angle H, angle D congruent to angle H, angle A congruent to angle E, angle C congruent to angle G, and angle B congruent to angle F. Congruent means if measurement of angle D is 30, so angle H also 30. This is called as congruent. Means congruent means दोनों का measurement equal रहेगा. अगर angle D 30 डिग्री है तो angle H भी 30 आएगा. If angle A 40 डिग्री, so angle E also 40 डिग्री. Angle C equal to 50 degree, then angle G also 50 degree, and angle B is 60 degree, then angle G also 60 degree. Means measurement दोनों का equal रहेगा, then it is called as congruent angles. This is the corresponding angles. Then next topic is alternate angles. Alternate angles, alternate interior and alternate exterior. Interior means line के बीच वाले and exterior means line के बाहर वाले. Okay, so second type is pair of alternate. Second type is alternate angles. Very most important these angles.
alternate angles. So alternate में first interior angles, इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट एंगल्स मीन्स जेड के शेप में जो भी एंगल्स आएंगे दैट इज द अल्टरनेट एंगल्स. हियर दिस इज द जेड शेप. ओके, सो एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई. एंगल जेड के शेप में ये वाला एंगल और ये एंगल, बोथ एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स. सो अल्टरनेट एंड बट अल्टरनेट इंटीरियर मीन्स ये दो लाइन के बीच वाले एंगल्स, क्रॉस वाले, सी के साथ ई और बी के साथ एच. सो दिस इज द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और लाइन के बाहर वाले मीन्स डी के साथ एफ ऐसे क्रॉस वाले और ए के साथ जी, ए के साथ जी. सो दिस पेयर्स आर द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. ओके, so alternate angles and alternate interior angles is first pair is angle C angle E, angle C के साथ angle E and angle B angle B के साथ H. This is the interior angles. Okay, and the property of alternate angles are when one pair of alternate angle is congruent then all the remaining pairs of alternate angles are congruent. Means angle C congruent to angle E, then angle B congruent to angle H. This is the alternate interiors. And exterior, then exterior angles. So first angle लाइन के बाहर वाले मगर क्रॉस वाले, ट्रांसवर्सल के क्रॉस, D के साथ F, so angle D and angle F. And second pair is A के साथ G, angle A and angle G are alternate exterior and both angles are congruent to each other. Okay, this is the alternate angles. Then next angles are interior angles. Third is interior angles. Interior angles. First angle. Yeah. Interior angles means angles between two parallel lines. Angles between, interior means अंदर के angles. ओके, सो कौन से लेना है तो लाइन के बीच वाले. सो लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, सो एंगल सी के साथ एच, बी के साथ ई. सो दिस इज द इंटीरियर एंगल्स. सो एंगल सी एंड एंगल एच, दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, एंगल सी एंड एंगल एच. एंड सेकंड पेयर इज angle B and angle E. But property of this interior angles are sum of interior angle is 180 degree. This is not congruent. Interior angles are not congruent. Property of interior angles are angle C plus angle H equal to 180 degree and here angle B plus angle E equal to 180 degree. This is the property of interior angles. Means pair of interior angles is supplementary. Okay, if one pair is supplementary then also other pair is supplementary angles. So this is the supplementary. Supplementary means sum of two angles is 180 degree and complementary means sum of two angles is 90 degree. So this is the supplementary means sum of these two angles is 180 degree. This is the interior angles and some important properties given page number 13 and 14.